2 planets are weak. So Okay. she'll have everything, but it does that show off. मतलब दुनिया की नजर में सब बढ़िया है, किसी चीज का कमी नहीं है. But internally things are not good like this. Okay. And how do you see it going forward? She's going through Rahu Mahadasha as of now, and Rahu Mahadasha and Shani Antardasha, Okay. and this will go on till 6th March 2024, and after this Rahu Mahadasha and Buddha Antardasha. First of all, let's understand the Rahu. Rahu is in 4th house because Rahu is the principal right now. It's a Mahadasha of Rahu going on. 4th house relates to house of घर का सुख, happiness, गृहस्थी का सुख, घर का सुख. And this period has started from 2016 March onwards. So from 24th March 2016 onwards, this Rahu Mahadasha has started. And this is not a favorable period. And this period stays because Rahu is in 4th house, so probably it will happen like husband is somewhere else and she is somewhere else, Like in the same house, she is living in another room and husband is living in another room. Means they are married, but they are not emotionally or physically having that much good bonding. And this Rahu Mahadasha is there till 25th of March 2034. Now what will happen in between these periods? Sometimes they will think, okay, we can live with each other, things are going good, but suddenly things will again go back to zero. Because Rahu is in 4th house, जो घर के सुख को खराब कर देता है, जीवन साथी के सुख को खराब कर देता है. Okay. Understood. Now, when you say it is bad, how bad do you see? Do you see it heading towards a separation as well? Yes, and the period is already going on for that. And on what basis do you see the separation? Because Rahu Mahadasha, Shani Antardasha, and the second thing, no, this is the period why I'm talking, and you are asking what basis I'm saying this, because she's having combination of Surya Shukra and Surya Mangal. Now, what is Surya Shukra? Surya relates to fire, Shukra opposite sex, okay, skin, body, private part. So Surya Shukra combination here in 8th house with Mangal says that extramarital affair either she will have or her life partner is going to have. That's for sure. Because Surya Shukra combination. Okay, Shukra means opposite sex. So life partner or she definitely going to have extramarital affair. So and this extramarital affair, first thing, and secondly, it actually gives the separation also. अब वो सेपरेशन या तो अलग अलग रहकर होगा या फिर साथ में इट इज लाइक या तो कम्प्लीटली डिवोर्स हो गया या फिर एक ही घर में रह रहे हैं पर अलग अलग रह रहे हैं. ये ऐसी लाइफ देगा. Okay. And do you, if I ask you that, do you see a legal separation? Is she heading for that as well? Okay, so for legal separation, I will say one thing here that she's having. Just be online. Huh? Let me just go through. Okay. Yes, so now Mangal relates to court, kachari and all, okay? Court cases and all. So now Mangal is with Surya Shukra in 8th house and Mercury is in 7th house. So here the Mercury means dual personality. So Mercury in 7th house of life partner here gives the dual personality. One day, as I said, person will say yes, other day the person will say no. And legally it says yes because it is having combination of Mangal and Shukra in 8th house. She is Mangalek also, okay? वो सेपरेशन देता है, लेकिन वो सेपरेशन कब बनाएगा जब दोनों साथ में रहेंगे. अगर एक ही घर में अलग अलग रह रहे हैं तो वो सेपरेशन इजी नहीं करेगा. वो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस तो हो गया, राइट? तो वो ऐसे टाइम चलता रहेगा. Did you understand? Planet, when planet says that I will separate, तो वो
इसी तरह सेपरेट करेगा, या तो एक घर में दोनों अलग अलग रह रहे हैं और अगर दोनों एक रूम में साथ रहना शुरू कर देते हैं तो वो लीगल सेपरेशन जल्दी करा देगा. दिस इज अगेन अ टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट द लीगल सेपरेशन. I really don't understand this. That why? I mean, you're saying that if they live in two different rooms, then it is a physical separation. If they live in the same room, then it is a legal. It will help in No, legal I'm separation. saying it will help in giving the legal separation easily. The reason is Mangal and Surya is a planet of fire. Okay. So now when fire comes with skin, मैं आपको practically समझाने की कोशिश करती हूँ. जब फायर आप अपना हाथ, अपनी फिंगर अगर फायर में डालेंगे, प्रॉब्लम किसको होगी? आपकी फिंगर को होगी, स्किन को होगी, राइट? Yes. योर बेडरूम इज व्हाट? योर बेडरूम इज केतु एंड शुक्र. ओके, लाइफ पार्टनर इज शुक्र. सो व्हेन शी इज गोइंग टू बी विद हर लाइफ पार्टनर, वहां पे लीगल सेपरेशन बढ़ जाएगा, जल्दी बढ़ेगा, जल्दी होगा. ठीक है. लेकिन अगर वो पहले से ही अलग अलग रह रहे हैं, तो जो प्लैनेट बोल रहा है कि मैं सेपरेट करूंगा, तो वो सेपरेट तो उसने करा दिया वैसे ही, बिकॉज दे आर लिविंग सेपरेटली. दे आर नॉट एंजॉइंग द शुक्र वाला पार्ट. दे आर नॉट कमिंग ईच अदर फिजिकली. दे आर नॉट डूइंग फिजिकल रिलेशनशिप, राइट? So I am not saying here that they should live together and do the physical relationship, then they are going to have the divorce and all. What I am saying here is, if they are living in one room in their bedroom, then legal separation में easy हो जाता है, क्योंकि एक तरफ वो दोनों साथ में रह रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, रात का टाइम, राहु का टाइम साथ में काट रहे हैं. एंड राहु क्योंकि 4th हाउस में है, तो घर का सुख वो खराब कर रहा है, जीवन साथी का सुख खराब कर रहा है, तो वो एक ही घर में अलग अलग रात के, राहु के टाइम में अलग अलग सेपरेशन करा दिया उसने. तो यहाँ पर अगर वो इस तरह रहेंगे तो लीगल सेपरेशन इजीली नहीं हो पाए. So now tell me one thing. We are living under the same roof. We are living in two different rooms. For last 8-9 years, we are living in separate rooms. We are mentally, emotionally, completely detached. And it's been probably almost 15 years that we have any kind of a physical bonding with us, between us. So there's no physical relationship almost 15 years. We live in separate rooms. We're completely cut off with each other. So now you're saying that separation already ho gaya. But are you suggesting that you be on the same room, in the same bed, then legal separation will help, or are you going in that direction? What do you want? You want legal separation? Yes. So when you want legal separation, try to connect with her more. Oh, is it? Yes. I didn't know this. You need to get in touch with her more, because आपने सेपरेशन तो खुद कर लिया ना, आप लोग अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, है ना? प्लैनेट्स को समझिए, प्लैनेट्स का काम, प्लैनेट यहाँ इनका कह रहा है कि मैं आपको जीवन साथी का सुख नहीं लेने दूंगा, तो वो काम तो हो रहा है. आप लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन साथ में नहीं सोते, साथ में बात नहीं करते, साथ में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है आपका 15 साल, राइट? क्योंकि इनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि शादी होने के बाद मुश्किल से 1.5-2 साल शादीशुदा लाइफ अच्छी चलेगी इनकी, उसके बाद वो सिर्फ दिखावे की लाइफ रह जाएगी. Yes, absolutely. I know, because it is having combination of Mangal and Shukra with Surya. तो अगर आपको इनसे सेपरेशन चाहिए लीगली, तो आपको थोड़ा सा अपनी ईगो को साइड में रखकर इनसे कम्युनिकेशन ज्यादा करना पड़ेगा. बात करिए इनसे, ट्राई टू, क्योंकि देखिए आप पास आने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? और यहाँ पे इनके चार्ट के अकॉर्डिंग शुक्र मंगल क्या कह रहे हैं, हम दूर कराएंगे, तो वो जल्दी आपको इजीली डिवोर्स दे देंगे. This sounds funny. I know, but this is called planets. And this is called the that's why I say planets plays very important role. It's funny and confusing. No need to get confused. Just see, I do understand. 15 साल से बातचीत करी, अब अचानक से बातचीत करेंगे तो कितना अजीब सा साउंड करेगा, उसको भी लगेगा क्या जरूरत है, है ना? I know.
कोई भी होता है वो सोचता है अच्छा इसको कुछ काम होगा इसीलिए से, बट यू ट्राई टू कनेक्ट विद हर एंड यू हैव टू इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, नहीं तो आपको लीगल सेपरेशन इजीली नहीं मिलेगा बिकॉज सूर्य साथ में वन डे शी विल से कि मैं दे दूंगी और जब देने की बारी आएगी शी से मैं नहीं दूंगी, कर लो क्या करना है. And you are saying just by talking, just by getting into talking terms. Yeah, I'm not asking you to make physical relationship with her. I'm not saying this. Yeah, that cannot happen actually. Just talk to her. Okay. And she will not have physical relationship with the one she's going to marry. ये भी इनका चार्ट कहता है. इनके फिजिकल रिलेशनशिप अपने पति के साथ नहीं होंगे, किसी और के साथ होंगे, और जब किसी और से शादी हो जाएगी तो उसके साथ नहीं होंगे, चाहे पुराने वाले हस्बैंड से हो जाए. शी इज हैविंग दैट चार्ट. No, but I don't think that she. I mean, I'm sorry to say, but she can establish physical relationship with anybody. I don't think so. No, but I am talking about here with the planets, because जो इनका planet है ना वो यही कहता है. Understood. I fully agree with you, but what I'm trying to say is that I completely deny that she can set up a physical relationship with anybody. Yeah. Okay. But and when do you see the legal separation? If you see the chart. 1 second. See, the period is already going on, and this period is there till 6th of March 2024. ठीक है. अब अगर आप लोग लीगल सेपरेशन इस बीच में नहीं लेते हैं तो उसके बाद चांसेस नहीं है, बिकॉज एज पर हर चार्ट द पीरियड इज ऑलरेडी गोइंग ऑन फॉर सेपरेशन. देखिए, टाइम सिर्फ आपको बताता है कि अभी आपका ये समय चल रहा है, लेकिन आप अगर उस डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो चीजें अपने आप तो होंगी नहीं. Understood. I get you. So that means I don't have to wait for anything. I need to start discussing. Exactly, correct. Because the time has already started from 30th April 2021. Okay. Got it. Any remedy you want to suggest so that happens faster or easier? Okay, so for this, the first remedy, as I told you, कि आप जितना कनेक्ट कर सकते हैं वो कोशिश करिए, क्योंकि आपको उनसे दूर होना है ना. एंड बीइंग हर हस्बैंड, आप जितना पास जाने की कोशिश करेंगे प्लैनेट आपको उतना ही दूर करेगा. Okay. So just try to connect with her, not physically, emotionally, but talking terms में. Okay. And now you need to give me your word details for that. To tell the remedy? Yes. Because she's not going to perform any remedy, right? So you need to perform. Yeah, perfectly fine. I think, I mean, I will give you my details, but we have spoken once earlier. We had a long chat. What's your name? Come again? What is your name?